So हम लोग ने पिछले क्लास में we have discussed the two sector model with savings and investment and without saving and investment. ठीक है? Two sector model में without saving and investment we have just assumed that there are only two sectors, household and firms, and in what economic transactions they enter into. Household जो था वो firms को factor services sell करता था, उसके बदले firms जो थी वो factor payments करती थी household, and goods and services sell करता था firms और households उसके बदले payment करती थी. Then we introduced with savings and investment capital market. The household saves in the capital market and capital market invests in the firms or in the business. Like that is what I told you, that savings were your leakages from the circular flow. Why savings are considered as leakages? Because it reduces the flow of income. And why your investments are considered as injections? Because it increases the flow of income in the economy. Alright, so this question can be asked that why savings and injection, why savings are considered to be leakages and why investments are considered to be injections. Now students will come, हम लोग धीरे-धीरे realistic model पे बढ़ रहे हैं. पहले तो सिर्फ दो sectors थे, दो sector economy में नहीं होते. We all know that there are four sectors in the economy. That is your household sector, business sector, your rest of the world, and government sector. Okay. So now moving on to the third model that we are going to build is your three sector model. Okay, we'll start with the three sector model. Three sector model, and in this three sector model, हम household और firms के साथ we will show government. Okay, there are three sectors. We assume there are three sectors: households, firms, and your government sector, and we will discuss the economic relationship, that means the economic transactions that happens between them. इनके बीच जो economic transactions, पैसों का लेन-देन, some goods and services का लेन-देन, factor services का लेन-देन होता है, वो हम discuss करेंगे. किस way में होता है, किस direction में होता है. Okay, we will discuss all real flows and money flows. And remember one thing, students, that the three sector model represents a closed economy. Okay, it represents a closed economy. What is a closed economy? Which does not indulge in any kind of international trade. एक ऐसी economy जो कोई भी international trade में indulge नहीं होती, import exports में indulge नहीं होती. That economy is known as the closed economy. Okay, कोई भी हमारा international import exports नहीं है. So this model, it is based upon the assumption of the closed economy, that it is a closed economy. That means there are no international relations happening. Okay, जब हम four sector पे move करेंगे, then we will remove this assumption and will come upon the open economy, which have the international relationship, जहाँ पे import exports होते हैं जिस economy में, and that is the realistic model. This is also not a realistic model because it does not include a very important integral sector of the economy, that is rest of the world. Okay, so students, I will rub ये पूरा board हम rub कर देंगे because we will require more space for making the model. So I am rubbing this whole board, and please draw this diagram like I am drawing. जैसे जैसे हम draw कर रहे हैं वैसे ही draw करें, because इनको पूरा explained way में नहीं बना हुआ है diagram. All right, so this will be your three sector model. पहले हम लोग पूरा two sector model बना लेंगे with the help of leakages and injections. जो हम two sector model बना रहे थे पूरा वैसे बना लेंगे. ठीक है, क्या ले रहे थे, इधर हम लोग households ले रहे थे, एक सेक्टर हमारा हाउसहोल्ड सेक्टर था. ओके, और जस्ट इसके इधर पैरेलल हम क्या ले रहे थे, फॉर्म्स. We were taking firms
And what was the first thing? That households was selling its factor services to firms. Household अपनी factor services firms को बेच रहा था या firms household sector से factor services खरीद रहा था. ऐसे बोलो या ऐसे बोलो. ठीक है. What are the factor services? Labor, land, capital. Okay. So your household was selling your factor services to the firms. ओके एंड इसके बदले फर्म्स क्या कर रहा था, इनको पेमेंट्स दे रहा था. फैक्टर सर्विसेज फ्री में तो सेल करेगा नहीं हाउसहोल्ड, फ्री में जाके किसी फर्म में तो काम करेगा, फ्री में अपना लैंड तो दे नहीं देगा, फ्री में अपना पैसा लोन तो दे नहीं देगा. ऑलराइट, सो फर्म्स क्या करती है, इनके बदले पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट जिसको हम बोलते हैं. बिकॉज with the help of these factor services firms produce. अगर factor services नहीं होंगी, factors of production नहीं होंगे, firms will not be able to produce. ठीक है. So इसके बदले factor payments करते हैं. arrows का बहुत ध्यान रखना कि arrows कहाँ बन गए. Okay, students arrow बनाने की ध्यान रखिए. Okay, so इसको हमने dash क्यों दिखाया है, because it is a money flow. यहाँ पे money का payment हो रहा है और ये real flow है, इसलिए हमने एक पूरी सीधी लाइन खींची. यहाँ पे कोई मनी का पेमेंट नहीं होगा. ऑलराइट, फिर फर्म्स क्या करते हैं, आफ्टर प्रोडक्शन, आफ्टर टेकिंग हेल्प ऑफ दिस फैक्टर सर्विसेज, जब गुड्स एंड सर्विसेज बन जाती हैं तो क्या करते हैं, दे सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउसहोल्ड्स. उनको सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज. प्लीज ड्रॉ इट एवरीवन. और इसके बदले हाउसहोल्ड्स क्या करेंगे, फ्री में तो खरीदते नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, फ्री में तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते नहीं है, उसको बनाओ कॉपी में. कहानी बता रहे थे हम क्लास में. इसके बदले हाउसहोल्ड्स पे करते हैं इनको फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. तो पेमेंट्स फॉर गुड्स and services. Okay, then हम लोग ने क्या देखा था, if you want to show savings and investment तो हमें कैपिटल मार्केट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. इसमें हम लिखेंगे कैपिटल मार्केट बीच में. यहाँ पे कैपिटल मार्केट is nothing but all the banks and all the financial institutions. जितने भी banks हैं, financial institutions हैं, they are known as the capital market. So what households do? Households save in the capital market. It is denoted by the letter S. And what capital market do? Capital market invests in the firms. It is denoted by letter I. Okay. Capital market क्या करेगा? Invest करेगा firms में. कैसे invest करेगा? Firms आएंगे, बैंक से लोन लेंगे. Firms will use these loans for the investment purpose. Okay, so savings are your leakages and investments are your injections. Okay, now we will introduce our third sector, that is my government sector in the economy. Okay, now I am going to introduce the third sector, that is the government sector. I will write government over here. It is very easy to understand. And one thing students more, that अगर हम यहाँ पे सिर्फ two sector model दे देते, so what was the equilibrium situation of this model? What was the equilibrium condition? That savings would be equals to investment. अगर हमारा सर्कुलर फ्लो इक्वल होना है तो जितना भी सेव हुआ है कैपिटल मार्केट में सब इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, ताकि जितना भी लीकेज हुआ है वो सब इंजेक्ट हो जाना चाहिए हमारी सर्कुलर फ्लो में. देन ओनली द इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम. अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, ओके, देन या इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है, देन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन. ओके, अब गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है? सी गवर्नमेंट भी, इफ गवर्नमेंट को भी जो फैक्टर सर्विसेज चाहिए होती हैं, दे नीड लेबर फॉर वर्क, दे नीड कैपिटल, दे नीड लैंड आल्सो. तो ये भी फैक्टर सर्विसेज कहां से लेते हैं? हाउसहोल्ड से. जैसे फर्म्स हाउसहोल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट भी हाउसहोल्ड से ही फैक्टर सर्विसेज लेते हैं.
So households provide factor services to the government. Factor services in the form of labor, factor services in the form of land, factor services in the form of loans, etc. That is your capital. ये हाउसहोल्ड से ही प्रोवाइड होते हैं किसको? गवर्नमेंट. Alright, so the first will be your real flow factor services to the government. अब गवर्नमेंट फ्री में फैक्टर सर्विसेज, कोई गवर्नमेंट में फ्री में जाके काम नहीं करेगा. गवर्नमेंट को लेबर एम्प्लॉय कर रही है, अपने सरकारी स्कूल में टीचर्स रख रही है, या आर्मी में जो मिलिट्री रखती है, या पुलिस है, जितने भी जज हैं एक्सेट्रा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको उनकी फैक्टर सर्विसेज से बदले कुछ पेमेंट मिलता है. दे गेट सम पेमेंट. सो द गवर्नमेंट विल पे, गवर्नमेंट को पे करेगी, which are known as the factor payments. Okay. Likewise, अगर गवर्नमेंट को भी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट भी सामान खरीदती है ना. हॉस्पिटल है अगर तो वहां का सामान खरीदेगी, स्कूल है वहां का सामान खरीदेगी, रेलवेज है वहां का सामान खरीदेगी, बैंक है वहां का सामान खरीदेगी. तो ये सामान कहाँ से खरीदेगी? बिजनेस सेक्टर से तो खरीदेगी, फर्म से तो खरीदेगी. So firms provide goods and services to the government sector. जैसे वो household को goods and services provide करते हैं, ऐसे ही firms also provide goods and services to the government sector also. And the goods and services के बदले government इनको payment करती है. इस फ्री में तो कोई देगा नहीं. Okay. So payment for goods and services. Payment for goods and services. Alright. This is a very simple model that has been shown. अब government को हम लोग जानते हैं, government also works for the welfare of the people. Government लोगों के लिए, लोगों के welfare के लिए भी work करती है. So government time to time बहुत सारी welfare schemes पे खर्च करती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे खर्च करती है, जैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, फ्री लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है, या फ्री ई रिक्शास प्रोवाइड कर रही है, या कोई फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, ओल्ड पेंशन प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, मिलिट्री सर्विस में कोई रिटायर हो गया उसकी पेंशन प्रोवाइड कर रही है. सो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज द सोशल सिक्योरिटी schemes, or you can also call them as transfer payments, as I have told you. Why transfer payments? Because in payments के बदले कोई भी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता. अगर गवर्नमेंट किसी को स्कॉलरशिप दे रही है, या ओल्ड एज पेंशन दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रांट दे रही है, तो उसके बदले वो पर्सन हमारी कंट्री की प्रोडक्शन एक्टिविटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे, बट फिर भी गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है. These are your transfer payments or unilateral payments, that means one way payment. Factor payment में क्या हो रहा था? Factor payment क्यों कर रहे थे? Because factor services ले रही थी. Transfer payments करेगी या social security schemes provide करेगी, which are your unilateral payments. बिना किसी बदले के गवर्नमेंट हाउसहोल्ड्स को ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. ये भी हमारा मनी फ्लो होता है, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व होती है. सो जो थर्ड लाइन बनेगी हमारी, दैट इज योर ट्रांसफर पेमेंट्स, और यू कैन आल्सो राइट देम एज सोशल सिक्योरिटी स्कीम. सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ट्रिपल एस, की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. क्लियर? देन जैसे वो हाउसहोल्ड्स को एनकरेज करती है ट्रांसफर पेमेंट्स देके, ऐसे ही गवर्नमेंट आल्सो ट्राइज टू एनकरेज दी फर्म्स. गवर्नमेंट फर्म्स को भी एनकरेज करती है. कैसे एनकरेज करेगी? सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी. जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिसे गवर्नमेंट कहती है अगर आप अपनी कंपनी रूरल सेक्टर में बनाते हैं, विलेज सेक्टर में बनाते हैं, तो हम आपको इतना पैसा देंगे. और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इतना आपको पैसा देंगे, स्टार्टअप कर रहे हैं तो इतना पैसा देंगे. सो गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज टू द फर्म्स. ऑलराइट, so subsidies are also money flows. So government provides
subsidies to the firms. अब लास्ट पार्ट बचता है द मेजर पार्ट, टैक्सेस. टैक्सेस हाउसहोल्ड्स को भी देना पड़ते हैं. पर्सनल टैक्सेस जनरली लाइक वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ऑलरेडी रोड टैक्स एक्सेट्रा. एंड टैक्सेस फर्म्स को भी देना पड़ता है लाइक जीएसटी, योर सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स. सो दोनों को टैक्सेस देना पड़ता है. किसको टैक्स देंगे? गवर्नमेंट को. और टैक्सेस में हमारे मनी फ्लोज होते हैं. तो लास्ट जो होगा हमारा दैट आर योर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. सेम इन दोनों का फ्लो एक ही तरफ होगा, गवर्नमेंट की तरफ टैक्सेस. So this is your whole three sector model. It is very easy to understand. बहुत इजी है इसको समझना. पहले टू सेक्टर बनाओ, फिर सेम टू सेक्टर में जो फर्म्स और हाउसहोल्ड के बीच रिलेशनशिप था वही तुम गवर्नमेंट और हाउसहोल्ड में दिखाओ और वही फर्म और गवर्नमेंट में दिखाओ. और लास्ट बचती दो चीजें, एक टैक्सेस व्हिच आर कॉमन ऑन बोथ साइड्स एंड गवर्नमेंट में गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रांसफर पेमेंट्स और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स टू द हाउसहोल्ड्स एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडीज टू द फर्म्स. सो ये तुम्हारा पूरा थ्री सेक्टर मॉडल बन जाएगा. और इनको एक्सप्लेन करना है तुम्हें. हाउ विल एक्सप्लेन इट? You will explain first the relationship between household and firms. Then you will explain the relationship between firms and household. Okay, पहली चीज household and firm. Then firm and household. Then third, you will explain the relationship between household and government. And third, you will show the relationship between government and firm. इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है. हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, व्हाटएवर इज हैपनिंग इसको देख के एक्सप्लेन कर सकते हो. हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच जो भी पेमेंट्स या रिसीव्स हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड गवर्नमेंट एंड फर्म्स, इन दोनों के बीच जो भी ट्रांसफर्स हो रहे हैं दैट यू कैन आल्सो एक्सप्लेन. ऑलराइट, नाउ हमको इसकी अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखनी है कि वेयर दिस गवर्नमेंट सेक्टर विल बी. गवर्नमेंट सेक्टर इक्विलिब्रियम में कब होगा? पूरा थ्री सेक्टर मॉडल एट व्हाट पॉइंट दे विल बी इक्विलिब्रियम. पहली चीज जो हमारे टू सेक्टर मॉडल में होता था, सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, वो तो हो गई होगा. एंड सेविंग्स मस्ट बी इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. What that means, whatever leakage is happening in the two sector, it must be equal to the injections. Then second, whatever taxes government is receiving, okay, whether they are receiving from the households or whether they are receiving from the firms, it must be equal to the total expenditure, total government expenditure that they make on the economy. जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट पास आए, जितना भी टैक्स गवर्नमेंट के पास आए, वो गवर्नमेंट सब खर्च कर दे इकोनॉमी में. कैसे खर्च करेगी? फर्म्स को सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करने में खर्च करेगी. गवर्नमेंट हाउसहोल्ड्स पे कैसे खर्च करेगी? उनको वेरियस ट्रांसफर पेमेंट्स या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करने में खर्च करेगी. सो हमारे जो टैक्सेस हैं, it is also a leakage from the circle of profit, because whatever purchasing power that household has, taxes reduce that purchasing power. For example, हमारे पास 50,000 रुपए हैं, अभी हम 50,000 का सामान खरीद सकते हैं, बट हमें 5,000 टैक्स पे करना है. तो जब 5,000 टैक्स पे करने के बाद हमारा परचेसिंग पावर कम हो जाएगा ना. That means it is a leakage from the circle of profit. So your savings and taxes both are leakages from the circular flow of income, because they reduce the flow of income in the economy. Likewise, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, जो भी टैक्स हमने पे करा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अगर वो यूज करती है इकोनॉमी में खर्च करने के लिए, देन वो गवर्नमेंट के पास जो पैसा गया होगा वो वापस इकोनॉमी में आ जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा. So government expenditure is injection, but investment and government expenditure is injection. So savings and taxes are leakages. Why? Because they reduce the flow of income. They reduce the purchasing power of a person. Now the person will be able to spend less. And what investment and government expenditure does? They increase the flow of income in the economy. People will get more purchasing power. और जितना सेविंग है उतना ही इन्वेस्टमेंट हो गया, और जितना टैक्स दिया उतना ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया.
the economy will be in equilibrium. सब कुछ बराबर हो जाएगा. So this identity we can write like this, that your savings must be equal to the investment and your taxes must be equal to the government expenditure. This is the mathematical identity that we can write. अगर इसको mathematical identity में दिखाना है, तो savings must be equal to the investment and taxes must be equal to the government expenditure. Then this three sector model of surplus of income will be in equilibrium. इक्विलिब्रियम सिचुएशन बता, तुम्हें कंफ्यूजन में लिखना है इसका आंसर. हमेशा कोई भी सेक्टर एक्सप्लेन करो और जब इस आंसर को कंक्लूड करो, then you have to write the equilibrium situation in the conclusion. It is very important. आंसर शुरू कैसे करो, जैसे हमने बताया, और ऐसे खत्म करो. Is it clear to everyone? This was the three sector model. Please draw it, everyone. And if there is any problem, you all can ask right now.